Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, which of the following order is incorrect? All right, and यहाँ पर हमारे पास four options given है जिसमें कि कुछ compounds को compare किया जा रहा है on the basis of some properties, solubility in H2O and boiling point. All right, so हमें देखना है कि इनमें से कौन सा जो option है that is incorrect. Now, since हम यहाँ पर कुछ physical properties compare कर रहे हैं, we can solve this question on the basis of molecular interactions. So the key concept over here is molecular interactions. All right. Now let us solve the question. First option में क्या है? Ethanol, then propanol, then butanol, and we are checking the solubility in water. All right. So this is CH3, CH2, OH. The next compound is CH3, CH2, CH2OH, and the next compound is CH3, CH2, CH2, CH2OH. Alright, and हम check कर रहे हैं solubility in water. Now, water solubility is due to hydrogen bonding. Alright, and hydrogen bonding in सब में possible है because we have these OH groups. But if we see, then water is a polar solvent. Alright, this is a polar solvent. So as we know that polar dissolves in polar solvents, polar compounds dissolve in polar solvents. इस अल्कोहल इन जो ये जो अल्कोहल्स हैं, इन अल्कोहल्स में जो अल्काइल पार्ट है दैट इज नॉन पोलर, एंड जो OH ग्रुप है दैट इज पोलर पार्ट ऑफ दिस कंपाउंड. सिमिलरली जो दूसरे अल्कोहल्स हैं उसमें भी ये अल्काइल ग्रुप्स नॉन पोलर पार्ट्स हैं. और जब हम इथेनॉल टू प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल टू ब्यूटेनॉल जाते हैं, देन ये पोलर पार्ट की नॉन पोलर पार्ट की लेंथ इंक्रीज होती जा रही है. दैट मीन्स अगर नॉन पोलर पार्ट की लेंथ इंक्रीज होती है, देन द solubility will decrease. That means the order of solubility is like this: ethanol is greater than propanol is greater than butanol, which is correctly given in option number 1. So this is a correct option. If we check option number 2, then this is ethanol, CH3, CH2, OH, then dimethyl ether, CH3O, CH3, and then this is propane, CH3, CH2, CH3. Alright. Now, इसमें क्या है? We have to check the boiling point. Now, boiling point is again dependent on molecular interactions or attractive interactions. Now, इसमें attractive interaction के तौर पे hydrogen bonding present है. So this is strong due to hydrogen bonding. But इसमें क्या है? कोई भी hydrogen bonding नहीं है. But here we have dipole-dipole interaction because यहाँ पर polarity present है. O generally carries a negative charge and CH3 group carry positive charge. So we have dipole interaction. But here there is no polarity at all. Propane में कोई polarity नहीं है और ये एक simple hydrocarbon है. So this is a non-polar compound, but anyhow this has van der Waals interactions. Van der Waals interactions. So अगर हम इनकी strength compare करें, then hydrogen bonding is stronger than dipole-dipole than van der Waals interactions. So if we assign the boiling point order, then this will be like this, because जितना stronger interaction है उतनी ज़्यादा boiling point होगी उसकी. So this is the order of boiling point, which is correctly given in option number 2. So option number 2 is also correct. If we check option number 3, then this is pentanol, pentanal and ethoxyethane. So अगर हम pentanol को देखें, this is C5H11OH. If we talk about pentanal, then this is C4H9CHO, C double bond OH. And if we talk about ethoxyethane, this is C2H5O,
C2H5. ऑलराइट, नाउ इसमें भी हमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है. सो यहाँ पर एज वी नो दिस इज एन अल्कोहल, सो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है. दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है. यहाँ पर सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, बिकॉज यहाँ पर कार्बन के पास डेल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के पास डेल नेगेटिव चार्ज है. And here also we will be having only dipole-dipole interactions. But look at the pentanal compound. यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो दोनों कार्बन के साथ अटैच हुआ है. सो यहाँ पर डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो कम होगा. So this compound will be having lesser boiling point than pentanal, and pentanal will be having a lesser boiling point than pentanol because यहाँ पर hydrogen bonding present है. So this is also a correct option. Now if we talk about the fourth option, that is methanol, ethanol and propanol, and we are comparing boiling point. So this is CH3OH, CH3, CH2OH, and then this is CH3, CH2, CH2OH. So now here we can see that CH2 groups increase होते जा रहे हैं. That means molecular mass भी increase होता जा रहा है. And we know that boiling point is directly proportional to molecular mass. So क्योंकि यहाँ पर molecular mass increase होता जा रहा है, that means boiling point should also increase. That means boiling point order should be propanol greater than ethanol greater than methanol. But यहाँ पर जो order दिया है वो reverse है. Here it is given that methanol has a greater boiling point than ethanol and propanol. So this is incorrect option, and हमें question में पूछा गया है कि कौन सा इनमें से incorrect option है. So option 4 is our incorrect option, which is the correct answer to this question. This is the required solution, and I hope you understood the concept well. Best of luck.